Pakistan has made remarkable progress in its poverty eradication efforts in the past decades. By 2015, approximately 32 million people were pulled out of poverty. But COVID-19 has reversed the gains the country had made over the last 30 years. An estimated 10 million more people are expected to fall into extreme poverty from the existing 50 to 60 million poor people in the country. Everywhere there is already clearly signals that the number of poor, unfortunately, will most probably increase if government do not very quickly engage into particular support packages. The reality is, Pakistan has been in financial trouble well before the start of the pandemic, relying heavily on loans to keep the fragile economy afloat. And now, COVID-19 has added an immense pressure on the country's already struggling economy. Well, the economy of Pakistan is unfortunately and sadly fragile. ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਗੁਰਦਾ ਵੇਚਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਗੁਰਦਾ ਮੈਂ ਵੇਚ ਛੱਡਾ. Will the government under its leader Imran Khan be able to bring relief to the pandemic-stricken poor communities in the country? And can the people of Pakistan cope with the devastating impact of the pandemic? Lahore, Pakistan's second largest city and the country's main industrial and commercial center. Some 12 million people live here, making it one of the most densely populated regions in the world. On the edge of Lahore lies an area called Makkah Colony. The slum region is where many of the city's poor have come to live. They can't afford to buy their own homes, so they live mostly in small, rented houses. Most of the people who live here are daily wage laborers who work either in factories or the construction industry. 60-year-old Ashad Mahmood has been living here with his wife and their 2 daughters for more than 7 years now, sharing the space with his sister and her 2 sons. Ashad works as a helper at a textile factory, while his wife is a domestic cleaner who works from house to house. With a meager salary of around $60 a month, life is a struggle. The amount is hardly enough to feed his extended family. To help supplement his income, Ashad took up a second job as a cleaner at a cafe. 5:30 बजे गाड़ी चलती है उधर राजू भाई के साथ जाता हूँ 5:45 बजे उधर शामिल हो जाता हूँ उधर फिर जरा 9-10 बजे तक राजू भाई के साथ काम करता हूँ उधर जरा ये जाकर टेबल तैयार जरा कपड़ा मार छड़े कुर्सियाँ से कपड़ा मार छड़िया बर्तन धो छड़े झाड़ू दे छड़िया मैं जरा सुबह उठता फैक्ट्री में जरा जाता हूँ उधर जरा ये महीने का मैं कमाता हूँ अंदर 10,000 रुपया उधर जरा शाम को छुट्टी करता हूँ इधर जरा राजू के पास जाता हूँ उधर जरा अंदाज़ा को 7,000 रुपया उधर मिल जाता उधर फिर जरा ये घर के जरा वसाइल खर्चे नहीं पूरे होंगे जरा मकान का किराया देना होंदा बत्ती का बिल देना होंदा गैस का बिल देना होंदा अगों फिर जरा ये बीमारियां 100 मेडिकल सरकार इस तरह निज़ाम नहीं पूरा होंदा गरीब बनना. His financial situation, however, took a turn for the worse during the pandemic. That was when several major cities were placed under lockdown in a bid to curb the spread of the disease. Factories were closed and all business activities were disrupted. All of a sudden, Ashad lost whatever little income he had received every month. जिस टाइम जब कोरोना आया सी उस टाइम हालात ख़राब हो गए सन जरा कारोबार बिल्कुल बंद हो गया सी सुबह फिर जरा शाम को जरा उधर राजू के पास जाता हूँ तो उधर रोटी लेकर आन के बच्चों को खवांदा सा कोई समझ नहीं आती पी मैनू
भी मैं बच्चों वास्ते करा कि रोटी पूरी करा या बेटी उठावां या की करा, कोई मेरे दिमाग की गल नहीं पई पैंदी बाजी जी। आ तो किराया देना है, बिल देना है, बत्ती का सूई गैस का बिल देना है, अगों फिर जोड़ा कि बाहर जो कर्जे लोगों के देने चुक चुक के खाई जा रहे हैं। इतना वसायल नहीं है भाई बच्चों का खर्चा पूरा कर लवां या बाहर कर्जा ले लवां। Ashad's sister, Mariam, had to resort to begging out of desperation in order to survive. बाहरों मैं निकलता भाई साड़ी हूँ जाने तो मैं हाँ तो लंगरदार ही जाना है ना, लंगर इधरों भी लैने उधरों भी लैके आने बच्चों तो खवाना ना लंगर, बच्चों का तो पेट भरना है ना। आप बंदा सब्र कर सकता, बच्चे तो नहीं ना सब्र कर सकते। ना के होए ना कोई चीज़ है ही नहीं का। चलो फिर जब किसी ना किसी पास कर दूँ मैं तो आख्या से फर्नीचर का लवा लो, कोई जेड़े 2 पैसे मिलते हैं फर्नीचर बेच दो। वो भी करना भाई वही ਤੁਹਾਡਾ ही है ना। वो भी जेड़े फर्नीचर वाले दे नाल गल की, वो भी जो दुकान बंद ही दुकान खोल ही नहीं रही। The Pakistani government has allocated some $900 million to help mitigate the impact of the crisis through emergency cash transfers. Each family received around $75 to help them get through the difficult period. Within 2 weeks of its launch, around 7 million of the country's poorest people had benefited from the scheme. According to a member of the Punjab Provincial Assembly, Wasiq Abbasi, the government has even extended loans to those who wanted to set up their own small business. Every provincial government has their own plans, they have their own channels to spend money, on programs to spend money, and on federal level they have their own. So if you talk about the largest province, in fact on population wise, on Punjab, we just launched a couple of months ago, we launched Apna Rozgar scheme, that huge scheme, easy loan schemes to youths, to youngsters, and to all those who want to start their own business. So we have lot of plans in second phase and then respectively in third phase, where our provincial governments and the federal government will invest more and more. Well, the government, in light of COVID, but also predating the pandemic, the government of Pakistan had put in place some quite impressive efforts to provide social protection to the poor. This was through programs such as the Benazir Income Support Program, which was a federal unconditional cash transfer poverty reduction program in Pakistan. These, efforts are really excellent, but what we find, and in terms of they truly are in terms of the good governance and management and delivery systems that are in place. But as we see now with the pandemic, they are by no means sufficient or comprehensive. And the real vulnerable groups, such as the informal economy workers, the abject destitute, they just really fall through the cracks. So, while I think the government's efforts are commendable, but they're not entirely effective when it is targeting the real poor. And Ashad is one of them. Until today, he's been left in the lurch. He has been frantically moving from place to place, asking for help to ease his financial burden. But aid is nowhere in sight. आज किसी दायरे में किसी गारमेंट में किसी मेरी मदद नहीं की थी। लोगों राशन मिलते रहने अगे पीछे मिलते रहने, मैंने कोई चीज़ मिली ही नहीं है। मैं क्या कोई दायरा हो गया, कोई फैक्ट्री होगी, मेरी किसी बिल्कुल मदद की ही नहीं है। बिल्कुल जग जहान मिलता रहा जो टाइम उन्होंने वो टाइम इन्हें गौर नहीं किया। बिल्कुल जो शनाख्ती कार्ड दी फोटो कापियाँ भी मैं जमा कराई, बतेरा अगे पीछे दौड़े बजा, किसी मदद नहीं की, फिर बाद ही क्या करनी सी। शनाख्ती कार्ड दी नकल लै लेंदे सन, बस ठीक है टाला वाला कार्ड छोड़ा। Ashad has not paid his home rent for the last 4 months. His landlord even threatened to evict him if he doesn't pay his unpaid rent in 3 days. With mounting bills to settle and loans to repay, Ashad has run out of ideas on how to resolve his financial problems. He even contemplated on selling one of his kidneys as a quick way to get out of his predicament. ਹੁਣ तो मैं इतना मजबूर हो गया भाई मैं अपना गुर्दा बेचना था जेड़ा सोचे भाई गुर्दा मैं बेच छड़ा गुर्दा बेच के मैं फिर जेड़ा है फिर इस तरह फिर जेड़ा है कोई
ਬੱਚੀ ਠੀਕ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਉਠਾ ਲੈਣੇ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਲਵਾਂਗੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੇ ਵੇਚਣੇ ਤੱਕ ਆ ਟਾਈਮ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ੀਰਾ ਹੈ ਜੇ ਮਨ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਮਨ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੰਨਣੀ ਹੈ ਗੁਰਦਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਦਾ ਵੇਚ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਟੈਨਸ਼ਨ ਭਾਈ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਤੇ ਬਸ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਖਾਣ ਸਾਨੂੰ ਪੀਣ ਕੋਈ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਨਾਲ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੋਰੀ ਰੱਖਦਾ ਰਾਤ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਤ ਸਿਰਫ ਕਿਰਾਏ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਭਾਈ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੈ ਬੱਚੇ ਤੇ ਆਦਮ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜਿੱਥੋਂ ਦਿਲ ਨੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਸਾਨ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦਿਓ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਮੰਗਣਾ ਬੱਚੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਚੀਜ਼ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਪੀਸ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਾਂ ਲੱਦ ਦੋ ਮੇਰੀ ਚਪਨੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚਪਨੀ ਮੇਰੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਪੀਸ 3 ਪੀਸ ਹੋਏ ਘੁਟਨਾ ਜੀ ਘੁਟਨਾ ਟੁੱਟਿਆ Fortunately, the owner of the cafe he works for is willing to offer a helping hand during his time of need. ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਬਾਜੀ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਡਰ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਰਨਾ ਜਾਂ ਭੁੱਖ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਰ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ आज हर टाइम मैं जो बच्चों की रोज़ी भी ना पूरी कर सकते इंज मेरा हालात हो चुके हैं। मैं सर ये जब कोरोना वायरस जब शुरू हुआ ना जब लॉकडाउन मतलब हमें यहाँ पे जो इधर की इंतज़ामिया की तरफ से कॉल आई थी तकरीबन 8-9 महीने पहले की कॉल थी कि ये टोटल बाज़ार यहाँ पे बंद होंगे। पहले भी इधर अल्टीमेटम दिया था उन्होंने कि बाज़ार बंद होंगे लेकिन हम लोग दुकानें खोलते थे अपनी। लेकिन एक दिन जब वो एलानिया आगे उन्होंने कहा था कि कल हमें जो भी यहाँ पे दुकान खुली नजर है हम उसको अरेस्ट करेंगे। तो जो आम बंदा जो रोज़ रोटी कमाने जाता है और शाम तक उसको कोई रोज़गार नहीं मिलता है और फिर उसके बच्चे बैठे होते हैं कि पापा आएगा तो शाम को खाना खाएंगे। तो जब पापा शाम को आते हैं वो कहते हैं यार मुझे आज काम ही नहीं मिला तो वो बच्चे भूखे सोते हैं वो फैमिली भूखी सोती है। ये भाई उस वक्त से आ रहा है जब वो लॉकडाउन शुरू हुआ था तो तब से भाई के साथ मेरा सिलसिला है और रोज़ाना की बुनियाद पर मुलाकात होती है। और ये रमज़ान और वो 2-3 भाई और थे जिनको मैं रोज़ कहता था कि आपने मुझे मिल के जाना करना है। बाकी मैं मिलता तो सारों से था लेकिन इनको मैंने स्पेशल कहा हुआ था कि आप जब भी आते हो ना। Pakistan, first of all, if we look at the world, South-West Asia is home of some of the highest numbers of still poor in the world, as well as food insecure. So that is also due to the fact that some of the countries have the largest population. Pakistan is the 5th most populous country in the world. Well, this means that there is a lot still of poverty in Pakistan, although it is a middle-income country. And this poverty is closely linked also to food insecurity. Now, there's been a long battle against poverty in Pakistan, and it has yielded important results. We know that in over 14 years it went from 54% of population being poor to now about 24%. So there has been a halving of poor in Pakistan. This is a big result. However, it's not enough. It's not yet enough and the fight is not over. But when will the fight be over? Or is the fight against poverty a perennial battle that can never be won? What else can the government do to help struggling families back on their feet again? Will Arshad and millions of others like him be allowed to go hungry and suffer a slow death? Life has never been this challenging for 65-year-old rickshaw driver Muhammad Hashim. He has no job and no money. The pandemic has put the brakes on his earnings and put tremendous pressure on him to feed his 4 children, his wife and a few other siblings who rely on him entirely for all their basic needs. There are very few people who have opted for his rickshaw service in the wake of the pandemic due to fear over the spread of the disease.
and that has seriously affected his main source of livelihood. All of a sudden, his life has come to a virtual standstill, and he has nowhere to turn to. ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? ਮੇਰੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 4 ਬੱਚੇ ਨੇ। ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਠੀਕ ਆ, ਬਿੱਲ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਲਾਉ ਕੀ ਖਰਚਾ ਕੀ ਹੈ ਘਰ ਦਾ? ਖਰਚਾ ਸਰ ਤਕਰੀਬਨ ਆਟਾ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਆ ਲਿਆਈਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਰੈਂਟ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ? 250 ਰੁਪਏ। 250 ਰੁਪਏ ਪਰ ਦਿਨ ਦਾ ਰੈਂਟ? ਹਾਂਜੀ ਰਸ਼ਕੇ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਘਰ ਦਾ? ਘਰ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਹੈਗਾ 8000 ਰੁਪਏ। ਹੈ 8000 रुपया किराया एक पोर्शन का? नहीं है, ये मेरे वाले पोर्शन का। सर वही है कि अपने आप को घूट के ना हाथ बहुत टाइट करके, यहाँ अगर बच्चे पैसे मांगे बच्चों को नहीं देने, यहाँ से कोई धार ले देनी चीज़, इस तरह करके अपना सर्किट चलाते थे। In the meantime, Muhammad's rickshaw has been lying idle for months. Constantly exposed to the elements and the lack of upkeep, it fell into disrepair. It would cost him $200 to repair, something which he just can't afford to pay. ये रिक्शा जो सा बाहर ला के खड़ा करते थे, अगर घंटा 2 घंटा चला के आते थे, उसके बाद ला के बाहर खड़ा कर दिया। बाहर से बच्चे लटकते थे, कभी कोई पाइप तोड़ दिया, कहीं से वो कपड़ा पाड़ दिया, उसके बाद ला के हमने अंदर खड़ा कर दिया, तो ये सारा ख़राब हो चुका है। अभी इसमें टोटल कितनी कॉस्ट है, खर्चा कितना है इसको? सर इसके ऊपर 20 से 22 हज़ार का खर्चा है। क्या क्या है ज़रा बताएंगे क्या? इसके सर ये टायर पड़ेंगे, उसके बाद इसके ये यहाँ पे हुड जंगला जोन सा होता है ढांचा, वो लगेगा, तो फिर जाके ये मुकम्मल होगा। बॉडी जोन सी है वो नहीं डलेगी। तो कोई उम्मीद है कि ये हो जाएगा इंशाल्लाह ताला? सर ये आपकी मेहरबानी है। The sudden loss of income has now forced many rickshaw drivers to take up alternative jobs, including Hashim. Hashim now works as a labourer, earning much less than what he used to get as a rickshaw driver back then, before the start of the pandemic. But until today, he is yet to recover from the financial hurdles caused by the coronavirus. He used to earn $100. Now, it's nowhere near that. सर अभी अब जा रहे हैं, ये ठेकेदार के पीछे रंग का काम कर रहे हैं। वहाँ से कभी 500 कभी 800 इस तरह दिहाड़ी मिलती है जी। तो वो भी ठेकेदार भी ऐसे देता है, कभी 500 दे दिया, कभी 1000 दे दिया। अगर 2000 या 1000 इकट्ठा मांगे, वो कहता नहीं जी अभी इतने पैसे नहीं मिले हैं, मालिक नहीं दे रहे हैं, ऐसा भी होता है। Today, Hashim is worried if he can still put food on the table for his extended family. Fortunately for him, he was approached by Risk, a food bank based in Lahore. Its co-founder, Huzaifa Ahmad, and his partners have been collecting unsold food from the many restaurants around Lahore and distribute it to those in need. During the COVID-19 crisis, they mobilized 3,000 volunteers across 23 cities, distributing over 2.2 million meals. रिस्क जब हमने शुरू किया था तो बड़ा बेसिक प्रॉब्लम था जो कि हम सॉल्व करना चाहते थे, जो कि था कि इतना ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर 40% खाना जो है वो रिपोर्ट्स के मुताबिक ज़ाया कर दिया जाता है। इसको नंबर्स में ट्रांसलेट करें तो 36 मिलियन टन्स एवरेज पाकिस्तान के अंदर खाना ज़ाया होता है। और जब खाने ज़ाया करने की हम बात करते हैं तो ये वो खाना है जो फ्रॉम फार्म टू फोक, यानी कि आपकी पूरी सप्लाई चेन जहाँ पे फार्मर भी है, वेयर हाउस भी है, मैन्युफैक्चरिंग भी है, फिर रेस्टोरेंट है, वेडिंग एंड है, आपकी टेबल के आने तक 40% खाना ज़ाया हो जाता है। इसका मकसद यही था कि जहाँ पर भी खाना ज़ाया होगा हम इसको बचाएंगे और उन लोगों तक पहुँचाएंगे माशरे में जिनको इनकी ज़रूरत है, जो कि एक वक्त का खाना भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे माशरे के, वो लोग जो स्ट्रगल कर रहे हैं। Muhammad Hashim is fortunate that he's been selected as one of the beneficiaries of the food program. At least he and his family members will not have to go hungry. जो रिज़्क वाले हमें पैकेट देते हैं उसके अंदर आटा होता है, घी होता है, चीनी होती हैं, दालें होती हैं, घर की तमाम अशाई चीज़ें होती हैं, जिससे हमारा महीना बहुत आसानी से चलता है। और अगर ये पैकेट आपको नहीं मिलता तो क्या होता है? सर ये अगर ये पैकेट ना मिले तो फिर तो हम भूखे मरेंगे। तो क्या आपको ज़्यादा खौफ कोरोना से मुब्तला हो के मरने से लगता है या भूख से मरने से लगता है? सर हमें भूख से मरने से लगता है। मुझे ज़्यादा डर कोरोना से नहीं है, भूख से है।
कोरोना तो सर एक ये ख्वाही फैली है, ठीक है ये बीमारी होगी पर बाहर वाली साइड पे उतना है नहीं है जितना गवर्नमेंट ने हमारी ने फैला दी है। ये सिर्फ अपने कर्ज़ों के लिए पड़ा हुआ है कि हमारे कर्ज़े माफ़ हो जाएं तो हम गरीब जो उनसे वो पीछे जा रहे हैं। Pakistan has all the natural resources and capacities in country to feed its people and to eradicate hunger and malnutrition. Now, the issues are more to do with access to the information on how to do this, the right policies, implementation. So Pakistan has some good agriculture policies at the provincial level, for example. They're fit for purpose. It has a national food security policy which was developed and endorsed in 2018. It's first ever in Pakistan. The issue is more, how do you bring it down? How do you implement? So it's about implementation, enforcement of existing rules and regulations, and of course this would also entail a bit of a reform within the food sector in Pakistan. देखें, एक बड़ा सीरियस प्रॉब्लम ये है कि हमने जो हमारी ग्रास रूट पेनिट्रेशन थी, हमने पेंडेमिक में देखा कि वो बहुत लैक कर रही थी। मतलब गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज हैं, गवर्नमेंट के पास बहुत रीच है, बड़ा वर्कफोर्स है, लेकिन जो डाटा था जहाँ से लोगों को हेल्प की जा सकती थी, गवर्नमेंट वाज नॉट एबल टू रिएक्ट दैट फास्ट इन दैट मैनर। गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो अपनी ग्रास रूट की जो उनकी ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है या उसको बहुत स्ट्रॉन्ग करें, ताकि उनके पास जो डाटा है वो एक्चुअली लोगों का आना शुरू हो किसी साइकिल में, किसी सर्कल में। जो सेंसेस हैं, जो कि रिपोर्ट्स हैं, जो कि डेट सर्वेज हो चुके हैं, वो गवर्नमेंट के पुराने हैं, वो आउटडेटेड हो चुके हैं। To help Hashim be financially independent again, Huzaifa has even offered to pay for the repair costs of his rickshaw so that he can pick up passengers again and earn extra income once the pandemic situation improves. जैसा कि कितने दा बनेगा? ये तकरीबन ਇਹਦੇ ਤੇ 10-15 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੁੱਡ ਬੱਡੀ ਦਾ। तो तुम लग जाओगे काम ते काम शुरू हो जाएगा दोबारा? हाँ जी। तो अमजद भाई ये पर्सनली करके देखते हैं। तुम करो, ऐ मैं ਤੁਹਾਡਾ ਆਪੇ इदारा तो नहीं करेगा, मैं करा के देखना। तुम इन्हें ठीक कराओ, किसी वर्कशॉप को ले जाओ, आप चेक करें क्या खर्चा ठीक होते हैं ना। हाँ, उनके पास लेके जाएं, कितना खर्चा है मुझे बताएं। 3000 रुपया हर महीने देंगे, वो नहीं बेहतर। आओ बेहतर, जिस तरह तुम कहो तुहानू बेहतर है उस तरह कर दिओ। उस तरह कर तुम पता करो किहड़ी वर्कशॉप है, सब वर्कशॉप ठीक करा के तुहानू दे देने, तुम सानू वापस कर दे। वर्कशॉप आंदी हैगी इंजन शीट, इंजन वगैरह सही है इधर। हां जी, बॉडी लगनी ते बॉडी नहीं होया की बॉडी है पुरानी है, ऐसे थ्रो के ना बच्चों ने तोड़ती है ते बस ये पे खराब हो गया। हां जी, ते पिया रहा क्यों है सर? कारोबार कोई नहीं है, दूसरा कि इंदे ते सवारी कोई नहीं है, नीचे ती बंदी ओह बॉडी हैगी सी टूटी। देयर वाज अ लेडी दैट, वो जो एक खातून अकेले रह रही थी और वो खातून का एक अच्छा खासा घर था और वो हमारे पास कॉन्स्टेंटली मैसेजेस करती जा रही हैं। हमारी पोस्ट होती थी फेसबुक पे, उस पर कॉमेंट्स करें कि आई वांट फूड, आई वांट फूड, आई वांट फूड। हमारे पास ऐसे केसेस आते थे कि जो कि हमें लगता था कि यार लोग कभी कभी हमसे एक्सप्लॉइट भी करवाते हैं, कभी लेते भी हैं, लेकिन मैंने अपनी टीम से कहा कि मैं इनके घर में खुद जाना चाहता हूँ। मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये तो एक ऐसा घर है, दिस कैन बी माई मॉम, सो आई कुड जस्ट सी अ रिफ्लेक्शन ऑफ माई ओन मदर इन हर। वो एक ऐसी खातून थी जो कि पढ़ी लिखी थी, जो कि हर चीज़ थी, शी वॉज ओल्ड एज, बट उनके घर में कुछ नहीं था खाने को। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये तो मसला कहीं और जा चुका है ऑलरेडी। फिर मेरा जो एक राशन बैग था वो थोड़ा सा बेर मिनिमम के ऊपर बेस्ड था। सो आई रियलाइज़ कि उनको बहुत ज़्यादा चीज़ों की घर में ज़रूरत है। शी इज़ अ लेडी जो ऑलरेडी एक अकेले रह रही है, उनके घर में ग्रॉसरीज़ के अलावा कुछ हाइजीन का सामान चाहिए, कुछ और भी उनकी कुछ स्पेशल नीड्स हैं खाने के हिसाब से। मैंने उस ग्रॉसरी को इन्हेंस किया, जाके मैं दोबारा गया, मैंने ग्रॉसरी का बैग इन्हेंस किया और मैंने उनके घर पहुंचाया। लेकिन तब मुझे पेंडेमिक उस वक्त तक हिट नहीं हो रहा था जब तक मैं उनके खातून के घर नहीं गया, जब तक मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो गुर्बत की लकीर की मेरे दिमाग में डेफिनेशन थी कि वो एक तबके तक रिस्ट्रिक्टेड है, वो उस दिन वो बाउंड्री भी मेरे जहन में निकल गई। Tens of thousands daily wage workers in Pakistan have lost their source of livelihoods during the pandemic. Many have gone hungry.
The country's weak health infrastructure and cash-strapped economy have also imposed a tremendous burden on the government to respond effectively to the health crisis. The initiative by Huzaifa therefore provides hope for the less privileged families in Pakistan to carry on with their lives without having to worry about where their next meal is going to come from. बड़ा अक्सर हमसे ये सवाल पूछा जाता है कि पाकिस्तान में लाहौर में कोई भूखा नहीं सोता, लेकिन हम भी पहले उन्हीं लोगों में शामिल थे जिसमें बिलीव कर लेते थे, लेकिन आपको शायद अंदाज़ा ही ना हो कि गुर्बत किस मकाम पर पहुंची हुई है। और सफ़ेद पोश आदमी ख़ास तौर पे जो आदमी मांगता नहीं है, जो आदमी सड़कों पर नहीं जाता, जो भीख नहीं मांगता, उसके हालात ज़्यादा ख़राब हैं क्योंकि वो किसी से मांग नहीं रहा। और फूड बैंक्स कम्युनिटीज़ में बनाने का मकसद ये था कि उन लोगों तक पहुंचा जाए जिनको खाने की ज़रूरत है। और आजकल के दौर में बड़े ही अफसोस से कहना पड़ता है कि 21वीं सदी में जहाँ पे हम चाँद पे जाने की बातें करते हैं, जहाँ पे हम टेक्नोलॉजी की इतनी बातें करते हैं, वी आर नॉट एबल टू सॉल्व अ वेरी बेसिक प्रॉब्लम जो कि भूख का मसला है। आज भी आम आदमी को स्ट्रगल करना पड़ता है खाने के पीछे। आज भी आम आदमी सड़क पर, चौराहे पर भूख के पीछे भीख मांग रहा है। सो हमारा ये मकसद था कि हम किस तरह इस खाने को एक्सेसिबल बनाएं। आम आदमी के लिए खाना बेसिक नीड है, मतलब वो खाना नहीं होता तो वो बच्चे को स्कूल नहीं भेजता, खाना नहीं होता वो चोरी करता है, खाना नहीं होता वो घर में वायलेंस करता है। तो मेरा मकसद इस वक्त यही है कि मैं टारगेट माशरे के उन लोगों को अपने पूल के अंदर शामिल कर रहा हूँ जो कि वल्नरेबल हैं, जो कि मज़ीद वल्नरेबल हो गए हैं पेंडेमिक के बाद, और मेक श्योर कर रहे हैं कि इस तरह हम लार्ज स्केल के ऊपर एटलीस्ट जो घर के अंदर बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, जो फूड है, जो कि फंडामेंटल राइट है, कोई लग्जरी नहीं, हम उनके घर में किस तरह इंश्योर करा सकते हैं। COVID-19 has caused unprecedented pain to both the developed as well as the developing world. The loss of lives has been dramatic, and the economic damage is immeasurable. Tens of millions of people have fallen into extreme poverty. Others have lost their jobs, and livelihoods have been destroyed when the economy grinds to a halt. In Pakistan, the pandemic has so far killed more than 7,000 people, and almost 380,000 have been infected by the disease. The impact on the economy has been equally catastrophic. Growth has contracted for the first time in 68 years. Its unemployment rate has also surged from 5.8% in 2018 to 6.7% today. Well, the economy of Pakistan is unfortunately and sadly fragile. The worsening macroeconomic situation is the obvious reason. Slowing GDP growth, the rising debt, and inadequate domestic resource mobilization, which is based on a very weak tax regime, continue to keep the economy fragile. But, this is sort of underpinned by the fact that we have a really weak human development base. The rural-urban disparities are large in a rapidly growing population that faces severe challenges on many fronts. The effect is also being felt across all sectors, especially the aviation and tourism industries. Planes have been grounded after the closure of international borders, and that has affected industries which rely on air travel for their survival. 50-year-old Tariq Mahmood has been working as a travel agent for about 30 years. He's had a relatively simple life, earning around $370 a month, just enough to raise his family of 5, including supporting his sister and her 4 children. But everything turned upside down just overnight. तकरीबन 16 मार्च को फिर हमें पता चला कि भाई अब तकरीबन जो है ना ऑफिस हम क्लोज़ कर रहे हैं और फ़्लाइटें भी कैंसिल हो गई। आहिस्ता आहिस्ता जो फ़्लाइटें चल रही थी, एक 2 एमिरेट्स एयरलाइन, इत्तेहाद एयरलाइन, सऊदी एयरलाइन, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती गई और फिर उसके बाद वो तकरीबन ख़त्म हो गई हैं। तो ये 16 मार्च 2020 से ऑफिस हमारे बंद हुए और आज तकरीबन 8 माह हो गए, 7-8 माह हो गए, जिसकी वजह से ये अभी तक फ़िलहाल बंद ही हैं। अभी कोई ऐसा रेगुलर जो है वो ऑफिस नहीं चल रहा।
एयरलाइंस जो भी चल रही हैं थोड़ी बहुत वो ख़ुद जो है वो अपना टिकटिंग वगैरह ख़ुद कर रही हैं, यानी कि वो पैसेंजर को ख़ुद हैंडल कर रही हैं। उन्होंने ट्रैवल एजेंट को कोई ऐसा एसेस नहीं दिया हुआ कि वो काम करे। तो वो फिर यही है कि वो पैसेंजर लेके आता है ट्रैवल एजेंट एयरलाइन के ऑफिस में। No one was allowed to travel in a bid to contain the spread of the coronavirus across continents. And the losses to the aviation industry have been monumental. अब इस कोरोना की वजह से जब से मतलब कि आप कह सकते हैं कोरोना है, अब आपको पता है कि एक एरोप्लेन जो है अगर वो ग्राउंड हो जाता है या वो एयरपोर्ट पे रुक जाता है तो उससे 1 करोड़ों का नुकसान होता है। जो इंडस्ट्री है आपको पता है फिर वो पूरा एक जो एयरलाइन है उसके तो फिर किसी के 300 जहाज़ हैं, किसी के 350 हैं, किसी के 400 जहाज़ हैं, तो सारे अगर एकदम खड़े हो जाते हैं तो तकरीबन वो फिर बिलियंस में चला जाता है सारा जो नुकसान है। तो वो तो खैर जो इंडस्ट्री को हमारी इंडस्ट्री इस टाइम जो है वो ज़ीरो हो गई है, आप कह सकते हैं। और जो इंडस्ट्री को चलाने वाले थे, जो हम मतलब कि एयरलाइंस को चलाने वाले जो होते हैं वो ट्रैवल एजेंट ही होता है। अब ज़ाहिर है जब ट्रैवल आपकी एयरलाइन ही नहीं चल रही तो फिर ट्रैवल एजेंट कैसे जो है वो ट्रैवल करा सकता है। फिर पैसेंजर है, फिर उसने भी थोड़ा सा डर गया वो कोरोना की वजह से। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ, PIA यूरोप पूरा तकरीबन उन्होंने कवर किया होता लेकिन उनको ख़त्म कर दिया उन्होंने। तो अब डोमेस्टिक फ़्लाइट्स कोई चलती हैं तो उस पर कोई पिछले मैं ये कह सकता हूँ कि पिछले कोई इन 7 महीनों में मैंने कोई 3 के 4 टिकटें बनाई हैं। तो उसमें वो भी डोमेस्टिक टिकटें थी, तो उसमें कितना एक कमीशन होगा 3-4 हज़ार पे। तो अब वो ये है कि अब 3-4 हज़ार से। As businesses dried up, companies were struggling to stay afloat, and Tariq was asked to leave his job. Out of work and with little income trickling in, Tariq became deeply worried, unsure if he could survive financially, being the sole breadwinner in the family. इसी वजह यही सोचता था कि सुबह क्या होगा। इतने पैसे नहीं होते थे, मैं ये कहता था कि सुबह मैं अपने बच्चों को नाश्ता क्या दूंगा। One day, he met with an accident and fractured his leg. मैं ये था कि तकरीबन 13th of July 2018 में मेरा जो पहला एक्सीडेंट हुआ था, मैं घर से ऑफिस जा रहा था। तो घर के करीब ही मेरा एक पेट्रोल पंप है, तो वहाँ से गली है एक, उसकी थोड़ा सा वो डाउन है बहुत ज़्यादा। तो बच्चे आ रहे थे, बच्चे थे मोटरसाइकिल पे बैठे हुए थे। तो वो जब वो नीचे आ रहे थे तो मैं उधर से अपना स्पीड से वही 30-40 जो स्पीड नॉर्मली बाइक की होती है, मैं चलाता ही नहीं उसे। तो वो फिर उन्होंने जैसे ही वो नीचे उतरे तो आगे मैं आ गया, वो फिर उन्होंने मुझे हिट किया। तो मैं जो ये घुटना था ये जाके CMH में, तो उन्होंने कहा भाई ये तो तकरीबन हम 2.5 से 3 लाख रुपया लेंगे, हड्डी आपकी जोड़ देंगे लेकिन इतने पैसे लगेंगे। तो वो भी एक मेरे लिए बड़ा मुश्किल था अरेंज करना, लेकिन वो मेरे ऑफिस के बॉस अच्छे थे। Tariq re-injured his knee in July this year after a fall and needed another operation. But Tariq could not pay for his hospital bills, having used up all his savings. Luckily for him, there were kind souls who came around to help him bear the costs of the operation. But the same can't be said about millions others who've lost their jobs and who are struggling to survive in the post-pandemic world. Just last month, tens of thousands of people protested against Pakistan's Prime Minister Imran Khan amid concerns over the worsening economic conditions in the country. A recent survey done by Islamabad-based research organization Gallup also revealed that Pakistan's unemployment rate is predicted to surge to a whopping 28%. From 5.8%, the number of unemployed people in the country is estimated to reach 6.6 million during the fiscal year 2020 to 2021. Even the common folk are feeling the impact of the worsening economic conditions. 44-year-old drink and fruit seller Muhammad Atiq has been out of a job for at least 5 months now. Many customers are simply afraid to buy anything from him for fear of contracting the disease. And that has made it harder for him to earn a living to feed his wife and his 3 kids. फिर गर्मियों में जो ना शरबत का शुरू करता हूँ, लेकिन इस बार गर्मियों में शरबत नहीं चला क्योंकि कोरोना की वजह से लोग डरे हुए थे।
तो वो काम जो ना वो नहीं चल रहा था। शरबत का काम वो कहता है कि हर एक गिलास में हर कोई पी रहा, तो उस वजह से शरबत का लगाया, लेकिन 2-4 दिन नहीं बिका, उसके बाद बंद कर दिया। ये था कि फिर वो पूरा ये तकरीबन अगस्त तक जो है ना वो फारग ही रहा हूँ। ये तकरीबन मार्च अप्रैल से नहीं बिल जमा हुआ। पिछले माह कुछ पैसे जमा कराए, कुछ इस माह जमा कराएँ, तो आज वो आया हुआ था, वो कह रहा चेक करके कह रहे अगले मंथ आपने ना इसकी इंस्टॉलमेंट नहीं बनवानी, तो जो बिल आएगा वो पूरा ही पे करना है। बच्चों की फ़ीसें जो मार्च से लेके सितंबर तक की जो है ना वो अभी अक्टूबर तक की 1 माह की अभी पिछले महीने दी है, तो बच्चों की फ़ीसें सारी पूरे साल की तकरीबन जो है ना वो ड्यू है, अभी अदा करनी है। उन्हें स्कूल वालों को भी कहा कि अब हम ऐसे ही है कि हर पिछली फ़ीसों के साथ अगली एक फ़ीस जो है ना वो आपको दे सकेंगे। ये यकमुश्त जो है ना आप अगर कहें तो हम नहीं पे कर सकते। तो इस साल आप लोग स्कूल वाले भी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं ताकि बच्चों का साल ज़ाया ना हो। Until today, Muhammad Atiq has been waiting for help. He feels that cash assistance will, at least, help ease the burden that he and his family members are facing right now. But none has arrived. नहीं, किसी NGO की तरफ से तो कोई मदद नहीं मिली, ना ही इधर हमारे पूरे एरिए में मुझे नहीं लगता कि कोई NGO या कोई फलाई तंजीम वाले आए हों। गवर्नमेंट की तरफ से पहले मिले थे बेगम को एक पैसे, 12,000 रुपया आया था बेगम के शनाख्ती कार्ड पे। उसके अलावा तो ना कोई हुकूमती नुमाइंदों ने, ना कोई NGO फलाई तंजीमों ने किसी ने किसी किस्म की या राशन की मद में या किसी और तरीके से मदद की हो, वो तो कोई नहीं हुई। Is there hope at the end of the horizon? Or none at all? It has upended lives, taken away livelihoods, and left the poor struggling to fend for themselves. It's the same story being repeated worldwide as countries across the globe make painful adjustments to life in the post-COVID world. And Pakistan is no exception. Its economy is projected to shrink for the first time in 68 years. The country has also been brought to its knees by soaring international debt burden, amounting to $112 billion so far. 60 million of its people are now living below the poverty line. Its weak financial situation, coupled with an economic crisis, has made it difficult for the government to reduce the plight of the poor and respond effectively to the country's health needs. According to Pakistan's 2020 and 2021 budget, the government spends only about $151 million on health. Despite Pakistan having the highest number of COVID-19 cases per capita in South Asia, its national budget for healthcare constitutes a mere 2% against the global average of at least 10%. Pakistan has been spending less than 1% of its GDP on health for decades. It's just simply not sufficient. And the same can be said about education. So, clearly this allocation, and what you saw in the budget this year, it's not enough, and it poses a number of risks, particularly in a context where an already struggling, fledgling public health system is failing to deliver on, the longer-term goals of providing education, health for all. But under COVID, it's come under an immense amount of strain. The community health worker, system, the vaccinators, midwives, and family welfare assistants, from our programs on the ground, are reporting that they're unable to perform their outreach services just because they just don't have the resources. Dr. Asad Ali Chowdhury is a gastroenterologist who works at a private hospital in Gujranwala. Dr. Asad is also the vice chairman of Parsa Trust, an NGO which helps the poor who suffer from liver disease. He has seen firsthand
how hospitals across the country are struggling to provide decent medical care to the people during the COVID period. Strictly speaking, there are not enough beds in the hospital, to be very honest with you. It's not the matter of beds only, it's also about the resources we have to handle this patient. It all starts from diagnosis, isolating the patient, and then you should have facilities where you can handle a patient who gets very sick, who gets short of breath, who's low on oxygen, and you have supplemental oxygen supply, or you have patients who can go on ventilator. So we didn't have enough beds. We received patient, we diagnosed them, and we appropriately referred them. Dr. Asad also feels that many of the hospital medical staff lack the necessary training to deal with a health crisis of this magnitude, and that has further compounded the problems faced by the medical workers. Many of them are simply not able to deal with the infected patients well. Even the medical staff are unsure on how best to protect themselves against the disease due to their lack of preparedness and training. It's not simply about how to deal a patient. We have to know about the infection control measures. That's where I found the staff lacking. So they did not know the basics of infection control measures, how to respond to a situation where they're dealing with a highly infective patient, and how to protect themselves, how to protect others. Similarly, how to teach them how to raise awareness about the disease. And similarly, if we go one step ahead, the other thing was we did not have enough staff who were trained on ventilator. So we need to have a robust training system for nurses. It's the COVID epidemic, the pandemic actually has taught us a lot of things. The shortage of ventilators, etc., that's one thing. But I think the more significant underlying public health system are based on the fact that we have not invested enough. In Pakistan, another unique aspect is that a large part of the basic health services, as well as basic education services, are provided by the private sector, private providers. Many of these are public health officials, public health doctors who are doing private practice. And it's a tragedy because, people just cannot afford to pay for often low quality healthcare. Back in the village, fruit seller Muhammad Atif has been struggling to earn enough money to feed his family. He's also worried about the condition of his son. His son is suffering from a rare growth hormone disease and is in need of a constant supply of medicine. Otherwise, he will grow weaker as the days go by. Unfortunately, he's just too poor to afford the medication. तो 7 से 8 हज़ार की जो ना महीने की मेडिसिन बेटे की आती है। बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कि पूरा बेटे की दवाई के लिए 7-8 हज़ार रुपये महीने से अलहदा से निकालना, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है हमारे लिए। ये तो बस अल्लाह ताला का करम है कि अभी तक हम जैसे भी इधर उधर से पकड़ के या जैसे कोई मदद कर दे तो ये पूरी हो रही है मेडिसिन, नहीं तो वैसे अगर मैं कहूँ तो मैं मेडिसिन ही पूरी नहीं कर सकता। जितनी महंगी मेडिसिन मिलती है, और ये है भी ज़रूरी बेटे के लिए, बेटे की ज़िंदगी का मसला है तो वो छोड़ भी नहीं सकते, तो हमें ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, मेडिसिन की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है हमें। For now, the government can only offer a promise that help is on the way and that the healthcare situation in the country will improve over time with better budget allocation to meet the growing needs of its population. Definitely, the government has to tackle the situation of current health issues in COVID. So you can say that in future, government has to take a very strict measures, need to put more money in it. So we are more focusing to increase the budget on provincial level as well and on federal level as well on health, so that we could tackle the situation of pandemic, as we all know that it's going to severe and worse. But not everyone thinks enough money is being allocated.
So it's a combination of lack of adequate expenditure, allocations and expenditure for health, but also poor governance, low accountability, and that's very common. Now, in rural areas and peri-urban areas, I mean, you'll see in Pakistan, because it's not well regulated, there are private providers everywhere. To some degree, one can say that, they have also served to help, promote, like, say, a good immunization program and decent coverage of some basic health provision. But when it comes to a major pandemic crisis like this kind of broken system, is an opportunity for the government to look at how its entire public health system is being managed and governed. In the meantime, more and more Pakistanis are falling into extreme poverty. And the pandemic has made the situation even worse, especially for the poor daily wage workers who survive on odd jobs or irregular income to survive. सबसे बड़ा खौफ तो भूख से मरना है। कोरोना से तो जाहिर है कि एहतियात करके बच सकते हैं, लेकिन अगर कोरोना की वजह से कारोबार नहीं होगा, काम नहीं चलेगा, तो फिर भूख है, और भूख ही सबसे बड़ा खौफ भूख ही होता है। भूख से मरना ही सबसे बड़ा खौफ होता है। कुछ भी नहीं है, कोई चीज़, कोई नमक, कोई मिर्च, हर चीज़ डब्बे खाली। भाई ये जब से कोरोना आई है ना, इससे पहले भी कुछ बेहतर सी, और बहुत ज़्यादा हालात भाई ख़राब होते जा रहे दिन ब दिन, बहुत ज़्यादा। कोई चीज़ नहीं, बस। I think this is a question that all governments in the world are facing. And in Pakistan, food needs to reach the table of over 200 million people every day. The trade-off is not really about hunger or economic continuation. So the issue was more how to make these supply chains resilient and COVID resilient and COVID-free. It's an enormous task for a country, with a population of 210 million. I think the only way to do it is to build more collaboration, to work with local governments, local institutions, be they non-government or government, bring in the private sector more and make this a joint effort. Because without investing in the people, I don't think Pakistan can squarely get off on the path to recovery. Although the curve of infections has flattened in Pakistan of late, the pandemic has wreaked havoc on the country's struggling economy. It's also weighed down by a heavy external debt burden. In the meantime, around 40 million of its people are undernourished or food insecure. The pandemic has also inflicted a heavy toll on its already weakened public health infrastructure. Can Pakistan break its vicious cycle of poverty and debt? Nobody knows.